This is Jagriti and welcome back to my channel JagritiCreates. So first of all, I'm really very sorry for the long break. Actually past 1 month has been very tough for me, for a lot of people. अभी भी बहुत सारे लोगों की लड़ाई जो है अभी भी continue है. But I hope this ends soon. I hope सब कुछ everything will get back to normal pretty soon. So we have to be creative in this time. We have to be productive. और सबसे important जो चीज़ मुझे लगती है कि हमें ना खुद को busy करना होगा. So busy करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को पेंटिंग आती है, मैं पेंट कर सकती हूँ. तो आज मैं पेंट करने वाली हूँ कथकली, which is a very colorful painting. So I love colors. So let's just start. मेरा मेन पार्ट जो है स्केचिंग, दैट इज डन. यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने कैनवस को यहाँ पे मिड से डिवाइड कर लिया है. दिस इज 16 इंच कैनवस, जिसको मैंने मिड से 8 इंच ऊपर से लेके नीचे से लेके आई ड्रू अ स्ट्रेट लाइन और मैंने फेस को एकदम मिडिल में रखा है सो दैट इट गेट्स अ नाइस फ्रेमिंग. सो स्केचिंग डन है. अब उसके बाद हम उठाते हैं कलर्स और स्टार्ट करते हैं. स्केचिंग कंप्लीट करी और मैंने अपने कलर्स निकाले. वैसे ही रुद्र जी की नींद डिस्टर्ब हो गई और आई एम अ लायन टेमर. लायन को सिर्फ मैं सेट कर सकती हूँ. सो आई हैड टू गो. मुझे उस पर फिर से सुलाना पड़ा एंड देन आई केम बैक. नाउ आई कैन स्टार्ट कलरिंग. इफ यू वांट टू सी हाउ आई वर्क एज अ मदर और वो मेरे काम को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, हियर आर सम फ्यू क्लिप्स. Rudu will change the clothes. स्टार्ट विद द बैकग्राउंड. मैं अपने बैकग्राउंड को पहले ब्लैक करने वाली हूँ, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द फोरग्राउंड. व्हाई आर यू हियर? नो. मैं आपको फिर से बता दूं कि साइड की जो एजेस होते हैं उसको कवर करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपकी पेंटिंग जो है वो अनफिनिश्ड सी लगती है. नो
सो दिस इज माई डे 2. डे 1 में मैंने कुछ खास काम नहीं किया है. यू कैन सी दैट मैंने जो स्केच लाइन्स है उसको ब्लैक कलर से मार्क कर दिया है. सो स्केच लाइन के साथ क्या होता है कि आप काम करते करते आपके हाथ से इट गेट्स स्मच्ड. तो अभी मैंने ब्लैक लाइन से कर लिया है तो थिंग्स आर देयर. तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या पेंट करना है. तो नाउ आई स्टार्ट विद द थिंग दैट इज फार इन द बैक. ये चीज़ सबसे बैकग्राउंड में है, उसके फ्रंट में हमारा ये आ रहा है. तो पहले मैं इससे शुरू करूंगी, फिर उसके बाद आई मूव ऑन टू दिस पार्ट, देन विल मूव इट. मैंने अपनी रेफरेंस इमेज यहाँ पे आईपैड में ले रखी है. यू कैन टेक अ प्रिंट आउट और यू कैन यूज योर फोन. इट्स बेटर टू हैव अ रेफरेंस पिक्चर. ओके, तो बेसिकली हमारा ये जो बैकग्राउंड में आ रहा है दैट इज मंडला, बट यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज किया है. एंड नाउ आई एम गोना यूज दिस ब्राउन कलर हियर. वो मैं क्यों करूंगी, आई विल टेल यू. दिस इज अ सीक्रेट टेक्निक. एक्चुअली देयर इज ओनली वन टेक्निक. आपको जो अपनी रेफरेंस पिक्चर को ना, यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली. अगर आप यहाँ पे मंडला कर रहे हो, आपने सारे सेम से कलर यूज कर लिए हैं, तो वहाँ पे जो लाइट एंड शैडो का जो इफेक्ट होता है वो वहां पे खत्म हो जाएगा. इट विल बी अ नॉर्मल मंडला. बट ना हियर वी आर पेंटिंग एन ऑब्जेक्ट, अ पर्सन. तो वहां पे एक लाइट जा रही है, एक लाइट होती है, एक शैडो होती है. सी इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे जो है लाइट हमारी इस साइड से फॉल कर रही है. तो ये पार्ट जो है हमारा वो लाइट हो रहा है. दिस पार्ट इज अ बिट डार्कर. हालांकि ओरिजिनली ये सेम कलर होंगे, बट वो शैडो की वजह से ये डार्क हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो कलर टोन है, सेम कलर टोन में यहाँ पे ब्राइटर यूज करूंगी एंड आई विल बी यूजिंग अ डार्कर शेड हियर. ठीक, यही थी मेरी सीक्रेट टेक्निक बस. No. No. So as I told you in my last video कि मेरा ये जो ट्राइपॉड है ये टूट चुका है. तो I ordered a new one. Actually I got a gift voucher from Hobby Ideas Acrylic Paint. ये कौन सा है? Pedalite for this wall. एक कंपटीशन था वॉल आर्ट का. जिसमें मुझे इसके लिए 3rd प्राइज मिला है एंड दे गेव मी 10,000 रुपीज Amazon वाउचर. तो मैंने उसका यूटिलाइज किया है और आई ऑर्डर्ड अ नाइस ट्राइपॉड. सो लेट्स जस्ट गो एंड अनबॉक्स इट. बेबी कम. चलो लेट्स गो.
So here it is. इसके साथ आई स्केल, दिस इज द स्केल, एंड इसके साथ ये भी आया है, दिस इज द कलर पैलेट व्हिच आई रियली नीडेड। ये मामा का ये कलर पैलेट, हाँ ठीक है एंड ठीक है, ये छोटा बड़ा क्यूट सा कैनवस स्टैंड है, जिस पे आप छोटा सा कैनवस रख सकते हो। ये ऐसे करके you can place a small canvas. Can you let me talk? Okay. तो ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया था, as you can see कि बहुत सारा बबल रैप है और इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है अभी मुझे इसे असेंबल करने में। तो असेंबल करके मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। So ये मेरा पुराना ट्राइपॉड है एंड दिस इज माय न्यू वन, एंड यू कैन सी कि ये बहुत स्टेबल एंड इट्स अ हेवी वन, तो आई एम होपिंग कि ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। आई एम होपिंग इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट।